Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to English for Grade 8. We are learning Unit 1. Its title is Equality and Humanity in Islam. Our today's SLO is give an informed response to a text and provide some textual reference in support. So my dear students, as we practiced yesterday, जैसे हमने कल इसको प्रैक्टिस किया था कि हमने अपने टेक्स्ट के ऊपर पहले अपना एक जो whatever knowledge we already have उस पर अपना एक रिस्पॉन्स जनरेट करना है और फिर उसको हमने सपोर्ट करना है हाउ फ्रॉम द टेक्सचुअल रेफरेंस कि ये टेक्स्ट में कहाँ लिखा है फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस नॉलेज और इंफॉर्मेशन राइट. हमने कल भी इसको प्रैक्टिस किया. टुडे विल कंटिन्यू द प्रैक्टिस. लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. दिस वाज द लिंक. Allah mentions in Quran Surah Al Imran verse 103 and hold firmly to the rope of Allah altogether and do not become divided. And remember the favor of Allah upon you when you were enemies and He brought your hearts together. And you became by His favor brothers. And you were on the edge of a pit of the fire and He saved you from it. Thus Allah does make clear to you His verses that you may be guided. Yes, my dear students. बेटा हमने कल भी इस खूबसूरत आयत को डिस्कस किया था. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज mentioning. अब देखिए जब हम इसके वर्ड्स को देखते हैं तो द मैसेजेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज टेलिंग अस कि हम बीइंग मुस्लिम उम्मा अखुवा में ही हमारा फ़ायदा है. और उसका आगे एक्सप्लेनेशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे दे रहे हैं. वी हैव लर्न्ड अबाउट डिफरेंट सहाबास अल्हम्दुलिल्लाह. और हमें पता है बेटा कि वो सहाबा जब इस्लाम में दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी पिछली तमाम जो भी उनके मसाइल थे even if they were enemy of each other when they entered in Islam सब क्या बन गए ब्रदर्स भाई बन गए. इससे बड़ी कोई बात हो सकती है. तो हम सब एक मुस्लिम उम्मा हैं. हमें एक दूसरे को कोई फर्क नहीं है कौन कहाँ से है कौन किस फिरका से है. नो वी शुड नॉट बी बिकॉज अल्लाह इज सेइंग डू नॉट बिकम डिवाइडेड. तो हम कैसे एक दूसरे को अलग कर सकते हैं. हम कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं. अल्लाह इज सेइंग और हम सब एक मुस्लिम उम्मा है. ये जब हम ये कहते हैं हम एक मुस्लिम उम्मा हैं और ये कहाँ लिखा है कुरान में. अल्लाह ने कहा है मत आप एक दूसरे को डिवाइड करो. डोंट बी डिवाइडेड. किसी भी फॉर्म में हमने एक दूसरे से अलग नहीं होना कि ये तो ये वाला सेक्ट है या ये तो ये वाली बिरादरी है या इनका इस इलाके से ताल्लुक है. हाउ कैन वी इवन थिंक ऑफ दैट जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं डोंट बी डिवाइडेड राइट. तो बेटा हम इस तरह से अपनी हमें पता है हम मुस्लिम उम्मा हैं. वी आर वन ऑल ओवर द वर्ल्ड. जहाँ पर भी एक मुसलमान है वो हमारा भाई है. कुरान हमें ये बता रहा है. ठीक है. तो हमने जब भी इस बात को करना है इस आयत को हम एज रेफरेंस दिस इज व्हाट टेक्सचुअल रेफरेंसेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हमें बताया. सूरह आल इमरान आयत नंबर 103. तो इस तरह से बेटा अपने कुरान के इल्म को बढ़ाइए ताकि हम जब कोई बात करें तो उसको हम कैसे ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ सपोर्ट कर सके. दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग एज वेल. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्टिविटी. यस्टरडे हमने जो टेक्स्ट पढ़ा था आई ब्रॉड वो उसी टेक्स्ट में से कुछ मैंने एक चंक आपके लिए लाई हूँ. नाउ टीचर काइंडली students will discuss in groups how many commands are there in this text. What you have to do, अब हमने क्या करना है आपने इसको पढ़ना है और commands को आपने नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 और टेल टू योर टीचर. एंड इफ योर टीचर आस्क हाउ कैन यू से इसमें 5 कमांड्स हैं 10 व्हाटएवर आई एम नॉट टेलिंग यू. तो आपने फिर टेक्सचुअल रेफरेंस से बताना दिस इज कमांड नंबर 1, दिस इज कमांड नंबर 2, दिस इज कमांड नंबर 3. ओके पॉज द वीडियो, एंजॉय द एक्टिविटी एंड देन कम बैक. Yes, my dear children. Are you done with it? Good. Now you see बेटा आपने कह दिया 5 for example. तो कैसे 5 उसको टेक्सचुअल रेफरेंस से आपने काउंट किया. गुड जॉब. नाउ लेट्स वंस अगेन. अब हम कल भी हमने ये बात की थी हमें इस प्रैक्टिस की क्यों जरूरत है. क्योंकि बेटा माशाल्लाह नाउ यू आर ग्रोइंग अप. अब आपकी बड़ी क्लासेस आ रही हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो भी बात करते हैं उसको वो ऑथेंटिक होनी चाहिए.
हम ये नहीं कह सकते ये इट्स लाइक दैट बिकॉज आई फील लाइक, राइट? आपने जो बात करनी है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, और ऑथेंटिक कैसे होती है? जब आप उसको रेफरेंस थ्रू ऑथेंटिक रेफरेंस बताते हैं कि फलां जगह मैंने ये पढ़ा है, राइट? सो इट enhances your knowledge as well as your critical thinking. अब जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप सिर्फ रीडिंग नहीं कर रहे होते, आप उस टेक्स्ट को एनालाइज करें कि दिस इज व्हाट आई नो, दिस इज व्हाट आई एम एडिंग टू माय नॉलेज, एंड दिस इज हाउ वी एनहांस आवर नॉलेज एवरी टाइम. ऑलराइट, ओके, सो लेट्स start the reading of rest of the text. All of you, before that you tell me, what did Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam instruct about the interest in his last sermon? Yesterday we talked about it. Now pause the video, answer this question to your teacher once again with the reference of the text. Okay, pause the video. Yes, my dear children, have you answered it? What our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam instruct about interest? Interest is that was mentioned here. Interest therefore has been forbidden. Okay, yesterday we talked about it. Allah has forbidden. और बेटा forbid जो है ये stop से भी vary. Allah has stopped right away. Okay, तो ये हमें interest के बारे में, और ये कहाँ mention है, ये हम यहाँ से reference ले रहे हैं, और ये reference क्या है? Yes, last sermon of our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Do you understand how we practice it? Okay, so let's continue reading. We'll practice it further, inshallah. No murders committed during the days of ignorance are to be avenged. Do not forget that every Muslim should be truly a brother to every other. Muslim, there is no preference for the Arab over the non-Arab, or the non-Arab over the Arab. A white has no superiority over black, nor does a black have any superiority over white. Only the goodness and piety of a man makes him superior to others. You see what is, how we can become. Yes, we want to be better than others. So what is the rule? Piety and goodness. जितने ज़्यादा अच्छे अमाल करेंगे, जितनी ज़्यादा अल्लाह के अहकामात को फॉलो करेंगे, उतने अच्छे आप बन जाएंगे. ये हमें यहाँ से, अब क्या है इसका टेक्सचुअल रेफरेंस? लास्ट sermon of our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O people, listen to me in earnest. Worship Allah. Say your 5 daily prayers. Fast during the month of Ramadan and give your wealth in zakat. Perform Hajj if you can afford. Feed and clothe your slaves with such food as you eat yourself, and with such clothes as you wear yourselves. If they commit a fault which you find hard to forgive, let them go away, and do not treat them harshly. Be kind and just to everyone. O people, no prophet or apostle will come after me, and no new faith will be born. Yes, my dear students, now you tell me, why did Prophet Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mean when he said that no new faith will be born after him? Pause the video, answer this question and support it from the text, and then come back. Yes, my dear students, are you done? Now, beta, are you practicing how we tell the answer and how we provide the textual reference? Good. Reason well, therefore, O people, and understand words which I convey to you. I leave behind me 2 things, the Quran and my Sunnah. And if you follow these, you will never go astray. What does astray mean? Have you ever heard this word? Pause the video, answer this question. Yes, my dear students, you know about astray. Yes, it is whatever is left after burning. So we don't want ourselves to waste, like whatever good we have stored, we should keep it safe for us. And how we can do it? By following the Quran
and sunnah of our beloved Prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is how we answer and support it from the text. All those who listen to me shall pass on my words to others, and those to others again. And may the last ones understand my words better than those who listen to me directly. O Allah, be my witness that I have conveyed your message to your people. Sahih Muslim 12:18. The last sermon declared that Hazrat Muhammad Khatimul Nabeen Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is last prophet of Allah, and religion of Islam is perfected by this message. It covers all the aspects of life. Yes, my dear students, beta, we learned many things and we need to think a lot about it and how we are going to do it through this activity. Once again, read the text thoroughly, and teacher, I request you बच्चों से थोड़े thought provoking question करवाइए ताकि उनको बहुत deeply इस message को understanding develop हो. So pause the video, enjoy this activity, and then come back. Yes, my dear children, are you done with it? Good job. And now it's time once again to complete the rest of the comprehension questions. First, tell the answers by yourself, then support your answers from the text, then write the answers in your notebook, pause the video, complete this task, and then come back. Yes, my dear students, are you done with it? Good job. These are the MCQs. You will complete it in your book. Now complete these MCQs in your book and then come back. Yes, my dear students, now it's time for your homework. Once again, it's a very interesting piece of text. You're going to read it and you will answer these questions from the text. And here is a worksheet. You will read this worksheet, this text, and you will answer these questions. So teachers kindly provide printed worksheet to students so they can practice how to respond to the text according to their personal response, and how to support the text from the text, how to support from the textual reference. So this is all about it. I hope we will practice it further. So till that time, keep learning, keep practicing. Thank you, and Allah Hafiz.